Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, what we have seen a graph in which the velocity is now not constant, okay, but it is constantly changing. It is not constant, but it is constantly changing, okay, and even the acceleration is also uniform, right? Pragya, what do you mean Yeah. by acceleration, Pragya? What do you mean by uniform acceleration? So when the body accelerates with same velocity with so when acceleration is in equal intervals of time. Okay, the acceleration is equal in equal interval of time. Okay, we can see the acceleration is uniform. Okay, good. Okay, so yesterday we have derived by using uh, by converting this whole graph into small rectangles, right? Because we know that rectangle provide us the displacement, right? Yes, Okay. sir. Yes, sir. If I go on dividing this graph into more number of rectangles, I will be getting my displacement nearer and nearer to the original value of displacement covered by the body, right? We are not getting exact, but we are getting an approximate, and that approximate is almost near to the original value. Okay. Yes, sir. Now we have seen second equation of motion, that is d is equal to ut plus half. It is where I think one more equation is remaining, that is third equation of motion, right? Okay, so we will be deriving third equation of motion. Yesterday we have derived the second equation by converting this graph into two areas. That is, upper part is triangle and upper part Triangle. is rectangle, right? Now we will be taking Yes. whole area, पूरा area from the area. Okay. Again, getting some kind of parallelogram. Okay, but it is called as, you might have heard the name trapezoid, right? Trapezium or trapezoid. Trapezium in ninth standard you might have heard this thing. Yes, sir. It is a type of parallelogram with different sides. सारे sides are different. Okay. Yes. Yes, sir. Up till here, Ah, my V naught, right? Up till here, this is my V naught, and this side will be V, and this side will be my T. Okay. Now, area of trapezium or trapezoid, area of trapezium is equal to half of is equal to half of, okay, the two parallel side. I am talking about parallel side. ये और ये parallel नहीं है, ठीक है? This two are parallel side. Okay, the half of two parallel side multiplied by the base. sir. Yes. Yes. Any confusion? No, sir. Half of two parallel side multiplied by base. Okay. So parallel sides are V naught plus V into T. Okay. Now acceleration, is it visible? Okay. Acceleration is change in velocity upon time. So time can be written as t is equal to v minus v naught upon a. Simple mathematics, okay? Nothing much. So half of v plus v naught and v minus v naught by a. Okay? And what I will be getting on left hand side of the equal to, ये क्या है?
एरिया क्या बताता है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? Distance. Velocity. Not velocity, it is displacement. Okay. A Displacement. by the object or car. So D will be half A plus B, A minus B. Okay. It is equal to A plus B, A minus B क्या होता है? A square minus A B A square. square minus B square. Binomial A square minus B square upon A. Okay. Now this 2 and this A. Okay. We'll be taking on left hand side of the equal to. So the answer will be simple. You already know that answer. That is 2 times AB is equal to here A square B square में here it will be B square minus is equal to B square minus B naught square. Okay. This is your third equation of motion. Right? सर एक बार स्क्रीन Yes, sir. Okay. It was easy because you have already studied the calculation part in 9th standard, but only one thing is introduced here, that if you convert the area under this graph into small rectangle, and that area will be giving you displacement, right? This thing is new. You have already studied the calculation, right? Area of triangle plus rectangle wala and area of triangle. Right? कुछ नया नहीं है इसमें. Done, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर. No? Okay, copy it down fast. Now we will be doing one sum related to this area of the thing, right? To make it more clear. Done? Yes, sir. Himanshu Singh, done. Meet Mishra. हाँ सर. Yes, sir. Moksh, switch on your video. Moksh, Aryan Prasad, and Harshit. Sir, 1 minute. Aryan and Harshit. Sorry. My video. Sir. You are not able to hear anything, Moksh? Okay, now we will be doing a sum related to this area under straight line. Okay, to make you more clear about this topic. Okay, theory to पढ़ लिया. Let's see how it can be applied to the practical life and in the numericals, right? ये तो जानना जरूरी है. Okay, so I am sharing my screen. Everybody just copy down the sum. Okay. Question number 4, everybody. Question number 4. Moksha, why were you late today? Sir, internet नहीं आ रहा था. Internet access ही बंद हो गया. Aryan Prasad, switch on your video. Even Harshit.
Yes. Now comment on the question number 4. Done everybody? No, सर sir. 2 लाइन भी नहीं हुए हैं 2 लाइन में नहीं हुए। सर। ठीक है, ठीक है। Take your time. बस ज़्यादा टाइम मत लेना, लेक्चर खत्म हो जाएगा। Yes, sir. Done. Done everybody? नो सर 2 लाइन वाले का भी right? Make it fast. यस सर Shubh and Aryan, switch on your video. Shubh, सर ऑन ही वीडियो अभी हुआ बेटा. And why were you late today? सर नेटवर्क बहुत सर स्विच ऑफ करके भी चालू एक काम करो ना, which card you are using? Use Vodafone. SIM card नया ले लो यार. सर जियो यूज कर रहा हूँ Jio, Vodafone is having better network. सर वोडाफोन बाद है Do anything but sort it out, yeah. Network issue अगर है तो sort out करो, because it will be loss for you, not for me. Problem ये आप यस सर देगा, problem होगा, right? Okay, done everybody. यस सर Okay, Yes, sir. okay, fine. अच्छा, read the question for 2 minutes. Read the question. Okay, so what has been given? Acha. A train passes a station A at 40 km per hour and maintain its speed for 7 km. Okay, and it is then uniformly retarding
stopping at B, which is 8.5 kilometer from A. Okay, ग्राफ में नहीं जाने डायरेक्टली, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन हम कंसीडर करते हैं. दिस इज माय B पॉइंट, दिस इज माय A पॉइंट. ओके, दो स्टेशन है एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इट इज 8.5 किलोमीटर, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस 8.5. Yes, sir. Okay. What has been given? Okay, 7 kilometer, right? A train is passing through A and it is moving uniformly. Okay, uniformly जा रहा है with constant velocity. पर कहाँ तक, कब तक? Up till 7 kilometer. okay, 7 kilometers. till 7 kilometer. Till 7 kilometer, it is moving with the velocity. Moving with the velocity 40 kilometer per hour. Okay, and what is happening after 7 kilometer per hour? Retarded. Retardation. खाली retarded for Uniform retardation. Uniformly. रखना यूनिफॉर्मली है. एरिया वाला सम कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म होना जरूरी है. अगर यूनिफॉर्म होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था वही निकाल सकते हैं. अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन. ओके, सो अभी बचा कितना है? 1.5 किलोमीटर, राइट? ड्यूरिंग दिस इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग बिकॉज़ उसको स्टेशन बी पे रुकना है. फाइन. सो we'll be drawing a graph of versus B versus B, right? Initially 0. Okay, initially train speed क्या है? What is the speed of train initially? 40 kilometer per hour. 40. तो ये start from some other station with zero velocity, ऐसा नहीं है, right? Initially डायरेक्टली दिया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, right? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है up till 7 किलोमीटर, right? मान लेते हैं this is our time t equal to 0. Let's say this is our time t equal to t1 and train reaches B point at let's say time t equal to t2. Okay, 0 पे it is at 40 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर कब तक वो रखता है? t equal to t1 तक, right? So this is my t1 and let's say this is my t2. Okay, तो ग्राफ कैसा आएगा? Let's say this is 40 किलोमीटर पर आवर. Okay, so it is constant till t1, right? It is constant till t1 and after that it is retarding. Retarding का मतलब क्या हो रहा है? There is a fall in velocity, right? Fall in velocity. Yes. So this will be the graph, constant and then falling. ठीक है? Yes, sir. Okay. अच्छा. Now what is the next line? क्या हो रहा है फिर? Even I have to read it. Second train starts. A second train from A at the instant the first train passes and being accelerated. Okay, थोड़ा spelling wrong हो गया. Being accelerated uniformly. Again uniformly accelerated है to some part of journey and uniformly retarded for the rest and stop at B at the same time as the first train. Okay, क्या बोला है? जैसे ही train it is passing from A station at that instant, okay, एक और train start होती है, but से क्या होता है कि वो ट्रेन जब स्टार्ट होती है it is accelerating for some part of the distance and after that it is retarding for the another part of the distance, right? But
मतलब दिया क्या है कि दोनों ट्रेन एक ही टाइम पे टी पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द सेकंड ट्रेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. एवरीबॉडी ओके। Yes, sir. फाइंड सेकंड ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड, ओके। वो कितने स्पीड से चला होगा कि दोनों एक साथ बी पे पहुंच गए, ओके राइट। सो ग्राफ कैसा होगा फॉर द सेकंड ट्रेन? अच्छा, इनिशियली सेकंड ट्रेन कहां पे था? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉट? रेस्ट पे था सर, रेस्ट, सेकंड ट्रेन। सो इट इज एट रेस्ट। अच्छा, उसके बाद what is given in the question that it is uniformly accelerated? Uniformly Yes, sir. मतलब क्या होगा? Velocity is changing but constantly, so it is a straight line or curvature वाला line? Straight line. Straight line, right? स्ट्रेट लाइन। Velocity is increasing with respect to time. Okay, let's say this is the sum part. Okay, now after going to some part of the distance, okay, it is then uniformly retarding. Uniformly retarding मतलब अभी velocity क्या होगा? Velocity decrease होगा but constantly decrease होगा, like 10, 8, 6, 4, okay, 2 इस तरह will be constantly decreasing, right? Yes, sir. तो दोनों at times t2 पे साथ में पहुंचने वाला है, ठीक है। ग्राफ समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। With the help of graph, okay, algebraically हमको सॉल्व नहीं करना है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करना है, algebraically हमको बिल्कुल नहीं करना है, ग्राफ को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है फॉर द सेकंड ट्रेन, ओके, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? स्पीड का इक्वेशन क्या है? चलो स्पीड का इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। You are being सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। you are being provided with distance or displacement. Distance and displacement can be interchanged in the straight line motion, okay? Okay. This distance upon time, तुम्हारे पास distance है, you are already being provided with the distance. Yes, sir. 8.5. अच्छा क्या? Time find करना है ना, right? Yes. यस सर। अब time Yes, sir. will be provided by the first train. अब सीधी सी बात है, जितना टाइम फर्स्ट ट्रेन ने लिया होगा उतना ही टाइम तो सेकंड ट्रेन ने लिया होगा ना पहुंचने के लिए। Yes, sir. उससे पहले भी नहीं पहुंचा, उससे बाद में भी नहीं पहुंचे, दोनों एक साथ दे आर रीचिंग द स्टेशन बी एट द सेम टाइम, ओके। सो वी विल बी फाइंडिंग टाइम बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रेन गिवन वैल्यूज, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। ध्यान करते हैं फिलहाल के लिए ट्रायंगल में कंसंट्रेट करते हैं फर्स्ट ट्रेन के ग्राफ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन? पहला तो दिया है द स्पीड और वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, if you look at the graph, ये graph is a combination of triangle and rectangle, right? Yes. यस सर। Yes, sir. ये जो rectangle है, वो rectangle is indicating कि मेरा velocity is constant कुछ टाइम के लिए, right? Yes. सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v is equal to d by t, right? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, ओके, एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो यहाँ पे we'll be using directly the formula is equal to p equal to d by t1, right? अच्छा, ये किसको समझ में नहीं आया कि why we are using directly formula v is equal to d by t1? अच्छा, याद करो पहले वाला ग्राफ, बेसिक वाला ग्राफ याद करो। बेसिक वाले ग्राफ में क्या था? सबसे पहला ग्राफ ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, ओके। तो यहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट डी है फाउंड आउट, ये जो
डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट किया था? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया था? सिंपल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ओके, दैट इज मीन, राइट? कोई ग्राफ यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, फॉर सर्टेन टाइम we were getting a rectangle वाला area. For this rectangle wala area, can we find the time t1? Yes, we can Yes, find. sir. Okay. Am I clear to everybody कि सिर्फ मैं ही सम सॉल्व कर रहा हूँ और इनको जाना है बस? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि nobody is getting it. चलो फाइन, ठीक है. So from काम होते हैं नोटेशन देते हैं O A B C and this will be D. So area of rectangle O A B and D. ठीक है. So the area will be OA multiplied by OD. Fine. And what is OA? What is OA? वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर. 40 kilometer per hour. And what is OD? Time. Time. T1. Time. T1. Area of OABD क्या represent करता है? What it is representing? कौन सी quantity it is representing this area? Distance. Displacement. Displacement. अच्छा, I want to find T1. अब मेरे पास क्या displacement है कि नहीं? Yes sir, 7 Yes, किलोमीटर. sir. I am provided with the displacement of 7 km. 7 is equal to 40 multiplied by T1. Okay, so we have to convert this 40 into meter per second, and this 7 into meter. So 7,000 40 into 1000. Get me the T1. Arshit, why are you not doing? सर हम किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट कर लेते तो. Sir 0.63. टाइम को हमको सेकंड में चाहिए था, वही कर लेते हैं. 0.63 seconds. Very much used to with seconds, right? तो कुछ seconds में हमको चाहिए. कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, because ये भी किलोमीटर में है, it is also in kilometer. हमको भी T1 hours में मिल जाएगा. It's fine. Sir Practice होगा और क्या. 0.63 second. Sir, T1 630. हाँ सर 6:30 आ गया. 6:30. 6:30 hours. Yes sir. सर 6:30. 6:30 hours होगा तो ये अमेरिका नहीं जाना है. हाँ सर. By day 6:30 seconds. ठीक है. मतलब ट्रेन A has taken 6:30 seconds to reach the 7 meters of a distance. Okay, right? अब ये बचा, right? शहर में 1.5 किलोमीटर वाला कौन सा एरिया दिखता है? क्या है? शेप क्या है? What is the shape? The shape. Half into base into height. half. It is representing triangle, right? Yes sir. The triangle. BD into DE. Triangle PD and C is equal to half into base BC Into height. PD, right? Okay. Again, the area of BDC is representing displacement. So DC कितना है?
BC is T2, right? 2. And what is PD? PD is again representing 40. 40. 40. and D is your 1.5. Okay. Chalo. Get me negative value. Seconds में. Calculate, practice करो. 0.075. 0.075. भाई ये आर्ट्स में, आज में सर ये जो बोला ना वो आर्ट्स में. नहीं, it's not 0.075. मतलब 1.5 किलोमीटर के लिए खाली 0.075 सेकंड्स लग रहा है. सर 270 है. सर सर 270. 270. सर 270. Okay. 270 seconds. अगर 0.075 होता तो बुलेट ट्रेन भी आई थिंक. अच्छा बुलेट ट्रेन तो शायद बहुत. सर वो आवर्स में है. हाँ ठीक है, I know. Just kidding, man. Okay. Now, total time we can now find out. That is T1 plus T2, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, total time. Total time taken by first train. That is T1 plus T2. 900. 900 seconds. 900. 900 seconds. Okay. At the same time, will be. For train 2. For second train. अच्छा सेकेंड ट्रेन का एरिया क्या है? अच्छा सेकेंड ट्रेन का शेप क्या है? Triangle. 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 ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? Half base. Half into base into height. Base into height. The perpendicular is can be drawn, that is altitude is 90 degrees, so we can use half base into height, right? So Yes, sir. you are provided with the time. Okay, can you get the velocity from half base into